Hello students, here SJ sir. Today in this physics class we are going to study some other types of vectors. In the previous class we have covered the representation of the vectors and some special types of vectors like unit vector and zero vectors. Now we are going to study some other types of vectors, in which first I would like to describe collinear vectors. Collinear vectors, the vectors which lie on the same straight line. The vectors which lie on the same straight line are called collinear vectors. And suppose the examples you can give like this. This is the vector A and this is the vector B, and both the vectors are lying on the same straight line. Suppose the name of the straight line is x dash. So A and B, both are the vectors lies on x dash. So these are the collinear vectors, and A and B are the collinear vectors. So in this way we can define the collinear vectors, and these can be in opposite direction also, but the condition is that they should lie on the same straight line. So these are also the collinear vectors because both are lying on the same line. So these are also the collinear vectors. So this is a special type of the vectors which is called as collinear vectors. Now we will see other types of vectors like parallel vectors. The other types of vectors are parallel vectors and anti-parallel vectors. So these are, after the collinear vectors we are going to study parallel and anti-parallel. And simple thing is that if the vectors are kept at some separation, and the angle between them if equal to 0 degree, then these are parallel vectors. And in anti-parallel, if the vectors are kept at some separation, and the angle between them equal to 180 degree, then these are anti-parallel vectors. Okay, so suppose example is that this is the A vector and this is B vector. Both are pointing in the same direction, so the angle between them is 0 degree and they are at some separation. Okay, so these are at some separation, so these two vectors are called as parallel vectors. Now as the example of anti-parallel vectors, you can take A vector and in opposite direction is B vector. So the angle between them is theta equals to 180 degree. Okay, both are in opposite direction but they are also at some separation. So these are anti-parallel vectors. So I think both the vectors are clear. These are some simple types of vectors. Now we will see other type of vectors. Now before going to discuss the other types of vectors, I would like to describe the difference between collinear and parallel oblique anti-parallel vectors. So the difference is simple, is that
कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल as well as can be anti-parallel, except that for the collinear the vectors lie on the same straight line. मतलब क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, बस डिफरेंस ये है कि दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए. तो सपोज करो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, पर फिर भी ये एक ही लाइन पे लाई करना है. तो ये ए और बी पैरेलल तो है, लेकिन साथ में क्या बोलेंगे, इनको कोलिनियर है. तो कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि ये सेम लाइन पर होना चाहिए, तब जाके ये कोलिनियर बन जाता है. ओके, सो हम एंटी पैरेलल भी बना सकते हैं भाई. ये ए वेक्टर बना दिया और इस साइड मैंने बी वेक्टर बना दिया, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. लेकिन देखिए इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री. ओके, तो एक ही डिफरेंस है कोलिनियर और पैरेलल और एंटी पैरेलल में कि दोनों अगर सेम लाइन पे लाई कर गए तो ये कोलिनियर बन जाएंगे. ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री यहां पर भी है, थीटा 180 डिग्री यहां पर भी है, जो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों में होता है. नाउ वी विल सी अदर टाइप ऑफ वेक्टर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर which is called as equal vectors. So the vectors which have same magnitude as well as direction, and both should represent the same physical quantity. Both represent the same physical quantity. Means if the two vectors are equal, they should have the same magnitude, same direction, and they should represent the same physical quantity. Suppose the example can be taken as, suppose y vector is given as 5 I cap and the unit is Newton. It means y is representing force. Because its unit is Newton and its direction is I cap. It means plus x-axis and its magnitude is 5. Now I want to make some equal vectors to the y. So if I take f vector, and if I am taking f vector equal to y vector, then f vector should have its magnitude. The magnitude should also be equal to 5. Its direction also should be I cap, and it should represent the force, because the unit of the y vector is Newton. So the unit also should be Newton. So f vector which is equal to y vector, for this condition the unit should also be of force. So the unit should be Newton. So f vector will become also 5 I cap Newton. So these three conditions should be there for making two vectors should be equal. Okay, so I think the equal vectors are very simple.
Three conditions should be satisfied. Now we will see other types of vectors. Now we will see negative vectors. Negative vectors. So the vector which have same magnitude, but opposite in direction, and the negative vector of any vector must also represent the same physical quantity. Means three conditions are there: same magnitude, opposite in direction, and same physical quantity. So the vector which satisfies these three conditions, it can be said to as the negative vector of any other vector. So suppose there is a vector, example, if there is a vector f1 vector is equal to 5 I cap and Newton is the unit of this. So if I want to make the negative vector of f1, so the negative vector of f1 is represented, it can be represented as f2 vector, and f2 vector should be equal to minus of f1 vector, because f2 vector is the negative vector of f1. So what can be write? Minus 5I cap Newton. Means same physical quantity, both are representing the force, same opposite in direction. Here the direction is minus I cap, either direction is plus I cap, and magnitude is 5. So you can also write in this way: 5 minus I cap. So direction is opposite, magnitude same, and unit is also same. Means same physical quantity, they are both represented. So in this way you can make a negative vector of any other vector, and we can also say that f2 vector makes an angle 180 degree with f1. So it means that negative vector always makes an angle 180 degree with the vector of which you are making a negative. जिस भी वेक्टर का आप नेगेटिव बना रहे हो उससे वो कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री. तो काफी इजी सा है नेगेटिव वेक्टर. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ लिखा हुआ है ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल. बिल्कुल सही है ये चीज, जरा देखो ध्यान से. इक्वल वेक्टर्स के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है, सेम मैग्नीट्यूड भी होना जरूरी है और सेम डायरेक्शन भी. लेकिन पैरेलल वेक्टर्स के लिए सिर्फ सेम डायरेक्शन होना चाहिए. ठीक है. इक्वल वेक्टर्स के लिए तीन कंडीशंस. इक्वल वेक्टर्स के लिए कितनी कंडीशंस? तीन. पहला है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए, प्लस सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, प्लस सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी. और पैरेलल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, ओनली सेम डायरेक्शन. तो अगर मैं दो वेक्टर्स बनाता हूं, सपोज करो एक ये वेक्टर बनाया मैंने ए वेक्टर, और ये लिखा है मैंने 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है ये वाली. और एक और वेक्टर बनाया मैंने बी वेक्टर,
जिसमें मैंने लिखा है 2 न्यूटन और डायरेक्शन यही वाली है, तो ये वेक्टर्स क्या इक्वल हो सकते हैं? ये वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते। एक तो इनका मैग्नीट्यूड नहीं है इक्वल, तो ये तो बिल्कुल वही गलत हो गए, ठीक है। और इनकी यूनिट देखिए, एक है वेलोसिटी की यूनिट यानी स्पीड बता रहा है, और एक है फोर्स, तो यानी ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर्स, अच्छा इन दोनों के बीच का डायरेक्शंस अगर हम देखें तो एंगल कितना है दोनों के बीच का? 0 डिग्री, यानी सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो हैं बट इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल। अच्छा, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड भी सेम कर देता, सपोज मैं इसको यहां कर देता 5 न्यूटन, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम है बट इनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। तो दे आर पैरेलल, पैरेलल हो सकते हैं क्योंकि दो डिफरेंट वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन इक्वल कब होंगे? जब सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। तो यहां पर इक्वल क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। पैरेलल जरूर है क्योंकि पैरेलल की सारी एक ही कंडीशन है कि सेम डायरेक्शन में होना, वो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। फिर हम दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं अब, ठीक है। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। हियर वी हैव रिटन दैट all negative vectors means opposite in direction, same magnitude, are anti-parallel, but all anti-parallel vectors are not negative vectors. So for the negative vectors the condition are same magnitude, opposite in direction, same physical quantity. These are the conditions for the negative vectors. And anti-parallel vectors, only one condition, opposite in direction. So only one condition is satisfying in both. So if I am taking an example, suppose that here a vector is A and its magnitude is 2, quantity is speed, suppose 2 meter per second, and I am taking another vector, suppose that is B vector. This is B vector and its magnitude is same, suppose 2, and quantity is Newton. So here we can say that yes, they are in opposite direction, but they have also same magnitude, but the quantity that they are representing are different. One is representing the velocity or the speed and other one is representing the force. So we can say that we can't be negative vector of A. Because they represent different physical quantity. So that's why they cannot be a negative vectors of each other. Okay? Direction is opposite. Yes, they are anti-parallel. But not negative. नेगेटिव वेक्टर नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों की क्वांटिटीज डिफरेंट है, लेकिन एंटी पैरेलल हो सकते हैं क्योंकि एक ही कंडीशन है एंटी पैरेलल की कि अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। सेकंड पॉइंट भी बहुत सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सी द अदर टाइप ऑफ वेक्टर्स, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। So coplanar vectors are that which have same plane. Means coplane means same plane. The vectors lying on
same plane. The vectors lying on the same plane are called coplanar vectors. Are called coplanar vectors. Means ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे. तो अगर हमारे पास ये तीन एक्सेस हैं, सपोज ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो यहां पर हम तीन प्लेन बना सकते हैं. ये वाला जो प्लेन है जो एक्स वाई एक्सेस को कंटेन करेगा, इस प्लेन को बोलेंगे हम एक्स वाई प्लेन. ठीक है. और एक ये वाला जो प्लेन है जो वाई जेड एक्सेस को कवर करेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम वाई जेड प्लेन. ठीक. और ये वाला एक जो प्लेन है जो जेड और एक्स एक्सेस को कवर करेगा, इसको कहेंगे एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन. तो हमारे पास यहाँ तीन प्लेन बनते हैं जो एक दूसरे के क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है. और अगर वेक्टर्स की बात की जाए कि भाई कौन से कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो जैसे अगर हम बात करें, कोई भी एक प्लेन अगर हमने बना लिया और उसके अंदर जितने भी हम वेक्टर्स बना रहे हैं, सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, सो ये जो प्लेन है, ये सपोज करो ये बोर्ड वाला जो प्लेन है ये वही है, ये वाला जो प्लेन, तो इस प्लेन में ही आ रहे हैं तीनों वेक्टर्स. यानी तीनों वेक्टर्स की जो लोकेशन है वो इसी प्लेन में है. इसका मतलब है ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये कैसे वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स. दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स. तो कोप्लेनर वेक्टर्स की एक ही कंडीशन होती है कि वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करेंगे उन्हीं को हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे. और ये तीन प्लेन आपको ध्यान रखना है फॉर द फर्दर एप्लीकेशंस. ठीक है. चलो, आई थिंक ये कोप्लेनर वेक्टर्स क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट वन इज को इनिशियल एंड कॉन्करेंट वेक्टर्स. So co-initial and concurrent vectors means the vectors which have same starting point. मतलब क्या हुआ इसका जरा देखेंगे ध्यान से. अगर कोई वेक्टर्स हैं, उनकी टेल एक ही जगह पर है, तो ये सारे वेक्टर्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओ से. तो ये इन सारे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉन्करेंट वेक्टर्स. कॉन्करेंट वेक्टर्स, सेम स्टार्टिंग पॉइंट ओ. बस नाम का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ की टेल से टेल मिली हुई है, टेल टू टेल, और यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इनको बोलेंगे को इनिशियल या फिर कॉन्करेंट वेक्टर्स विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ओ. नाउ देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ नेम्स हियर यू कैन गिव if the condition becomes head to head, means all the vectors are meeting at the same point. So the vectors which have the same meeting point means their head to head are connecting with each other at some point. That vectors are called, there is a name that is known as coterminous vectors. So the other name is coterminous vectors. So here the definition will become change. Now the other definition of the coterminous vectors is the vectors which have same ending point, which have same ending point. Okay, now example you can say that A vector, B vector and C vector, their head to head meeting occurs at O. So here these vectors are called coterminous vectors because their head to head is connecting at the same point. So there is a difference of name only. Okay, you can say that if I will shift these vectors, these vectors will become like this is C, this is B
and this will become A. So the same meeting point becomes same originating point. So here the condition will become tail to tail. So only the difference is name. Only the difference is between the names. The working is same. Means it is not very much concerned कि हमें ये नहीं देखना कि ये हेड टू हेड मिल रहा है या टेल टू टेल. देखिए आप इसको शिफ्ट करके ये भी बना सकते हैं. तो सिर्फ नाम का ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखेंगे. द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फिजिक्स. द प्रीवियस वेक्टर्स आर जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर्स, बट द मेन पोर्शन ऑफ द वेक्टर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर with the vector that is known as position vector. Here the position vector is the very important vector regarding the physics. तो क्या होता है पोजीशन मतलब लोकेशन. लेकिन लोकेशन भी किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होती है. तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्वर डिफाइन करना होगा कि आप लोकेशन किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो. ठीक है, तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करूं तो लिखूंगा इसमें द वेक्टर विच इज यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट in the space, okay, with respect to a reference point. Reference point means a observer. So here we are taking as a reference point is observer. So suppose we have three-dimensional world. So these three axes are I am using. So this is x, this is y, and this is z. That is out of the plane. Okay. Now I am taking a point, and here there is a origin which I am naming as O, and there is a point P whose coordinate is x, y, z. So generally we take the reference. Generally origin we take the reference. Okay. So we are locating the point P with respect to this reference, means that respect to origin. So how can we define the position vector of P with respect to the origin? The vector which is joining between O and P, and the direction is towards P. This vector that I am naming R vector is the position vector of this P position with respect to origin. So here the position vector of P is OP vector, and इसको हम लिख रहे हैं R vector. Now the R vector, that is a OP vector, can be written as in the form of I cap, J cap and K cap. Okay, in the form of fundamental unit vectors, you can write the vector of position of point P. So the vector becomes x minus 0 I cap. Position of the P means x coordinate of the point P minus x coordinate of the reference point. X coordinate of the position P minus x coordinate of the reference point into I cap, because these are writing in the x direction, plus now we will write in the y direction. So y coordinate of the point P minus y coordinate of the reference and j cap for the y direction, plus for the z direction we will write z minus 0 into k cap. So the r vector becomes xi cap plus yj cap and plus z k cap.
this will become the position vector of the point P with respect to origin. So in this way we can define the position of any point with respect to any observer. Okay, so in this way we can write the position vector. Generally we take the reference origin because it is very easy to write. If we consider the observer as the origin, so it is very easy because you only will have to see the coordinates of the point. So I think this is clear. Now we will take some examples for more clarity. But before giving some other examples, I would like to calculate the magnitude of position vector. So magnitude means length of an arrow. Length of an arrow of OP vector. This is the magnitude. So suppose these are our axis, and what if we have written the coordinates x comma y comma z. So if I am taking here x comma y comma z, how can we reach here? First we have to cover the x distance along the x-axis, and then along the y-axis we have to cover x distance from the x-axis. x-axis पे हमें x distance चलना होगा, y-axis पे हमें y distance चलना होगा, एंड फिर z-axis पर हमें z distance चलना होगा. तब हम पहुंचेंगे यहां पर. मीन्स कोई ये जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट P है, x, y, z. तो देखो ये जो वेक्टर बना है, ये वाला O से P वेक्टर, ये कुछ इस तरीके से बना. पहले हम चले अलोंग द एक्स एक्सिस, फिर हम चलेंगे अलोंग द y, एंड देन अलोंग z. तो पहले हम कहां पहुंचे? यहां पहुंचे x, y पर, एंड देन यहां से z एक्सिस पे z डिस्टेंस कवर करके पहुंचेंगे x, y, z. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं. तो हम पहले x डिस्टेंस आगे जाएंगे x एक्सिस पर, और फिर y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे y एक्सिस के अलोंग, एंड देन z एक्सिस के अलोंग z डिस्टेंस, और तब हम पहुंचेंगे ओरिजिन से इस P पॉइंट तक. ठीक है, तो मैं इस P पॉइंट को मिला देता हूं यहां से ओरिजिन से. तो ये जो वेक्टर है मेरा OP वेक्टर, वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ये बन गया मेरा OP वेक्टर. ठीक है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मुझे इस OP वेक्टर की लेंथ चाहिए. ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल चल रहा है. तो सबसे पहले हम कहां पहुंचे? x, 0 पर. फिर x, 0 से हम कहां पहुंच गए? x, y पर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इस वाले ट्रायंगल की लेंथ अगर निकालनी है, मतलब इस वाली साइड की लेंथ निकालनी है, तो पहले मैं इस साइड की लेंथ निकालता हूं, जो ये ट्रायंगल है उसकी. तो एक जो ये वाला ट्रायंगल है विदाउट z एक्सिस, इससे ट्रायंगल की लेंथ हो जाएगी x² प्लस y² का अंडर रूट. और देखिए अब ये जो है ये 90 डिग्री पर है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है हमारा. ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये कुछ ऐसा बन रहा है. ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा P पॉइंट हो गया x, y, z. दिस इज द P पॉइंट. हमें ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस चाहिए. ये डिस्टेंस है z, और ये वाली डिस्टेंस है अंडर रूट x² प्लस y². तो अगर मैं इसको हाइपोटेनियस मान लूं, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर. ओके, तो यहां से हमें बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो इसको अगर हम परपेंडिकुलर मान लें, एंड ये बेस हो जाएगा. दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो बेस यानी OP क्या हो गया? मॉड r का स्क्वायर. बेस का स्क्वायर हो गया x² प्लस y², रूट हट जाएगा, और प्लस z². यहां से हमारे पास मॉड r की वैल्यू आ गई, दैट इज अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हमने निकाला मॉड आर का, कितना आया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे इस ओपी वेक्टर की लेंथ तक पहुंचे। पहले हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल देखा जो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से बना था, तो हमने ये लेंथ निकाल दी थी, और उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल देखा जो ये लाल कलर से मिला हुआ है, और ये जेड और ये वाला, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। For the direction we will use the unit vector of r vector. So r unit vector is the direction which is equal to r vector divided by magnitude of r. So the direction is r unit vector, and this is xi cap plus yj cap plus zk cap, and divided by magnitude is under root x square plus y square plus z square. So in this way we can see the direction of r vector which is given by unit vector. So I will conclude some points from here, and these points are very important. So I am writing some formulas. In the form of formulas I am taking the conclusion. So here I am considering some conclusions. Suppose if a vector is in the form of ax I cap plus ay j cap plus az k cap, then its magnitude can be written as under root of ax square plus ay square plus az square. These are the coefficients of I cap, j cap and k cap respectively, and its direction is given by the unit vector. So in this way we can conclude some points. So we can calculate the magnitude as well as in the direction with the help of these formulas. Now I am taking some examples for the position vector. So example 1. Suppose only two axes are there and the coordinate is 1, 2. This is the P point and the origin is here. The position vector of, I would like to calculate the position vector of P. So that is nothing but is OP vector. So OP vector will be represented by this. This will be the position vector of P point with respect to origin. Okay. So OP vector can be written as 1 minus 0 I cap plus 2 minus 0 j cap, and k cap is 0. So OP vector becomes I cap plus 2j cap, and magnitude will be under root of, here the coefficient of I cap is 1, so 1 ka square plus coefficient of j cap is 2, so 2 ka square, and that is root 5. And direction we can write as OP unit vector. So OP unit vector means I cap plus 2j cap and divided by magnitude, root 5. So in this way we can calculate the different position vectors. So here I am calculating the position vector of point P with respect to the origin. So these are the position vectors characteristics. Now the magnitude we can understand here that for the magnitude you can say that the length of this arrow, that is magnitude of OP. So length of this arrow is this P point and origin. So here we will calculate the length. So how can we reach at P point? How can we reach at the P point? First we will cover that x coordinate, that is the 1. So first we will reach here at the coordinate 1, 0.
and now I will go in upward direction by the magnitude 2. So we will reach at P point. Now with the help of Pythagoras theorem I can calculate its length, that is nothing but root 5. So in this way we can calculate the magnitude and we can understand also. So we will apply directly formula, we will not use this Pythagoras theorem again and again. So we can apply the formula also that we have written. I think this example is clear. Now I will take another examples. Now there are some examples here. There is a origin, there is a P1 point whose coordinate is x1, y1, z1, and there is a P2 point whose coordinate is x2, y2, z2. I am considering the P1 as an observer. Okay, so now if I will take the observer at the P point and I want to calculate the position vector of P2 with reference to P1. So the position vector of P2 with reference to P1 will become in this direction. So this is the P1 P2 vector. This is the position vector of. So this is P1 P2 vector. This is the position vector of point P2 with respect to P1. And here we can write that x2 minus x1, the position of the point P, means the coordinate of the point P minus the coordinate of observer, into I cap, plus y2 minus y1 j cap, plus z2 minus z1 k cap. So in this way we can calculate the position vector of point P2 with respect to P1. Now I want to calculate the position vector of P2 point with reference to origin. Now I am considering origin as an observer. So the vector will become in this way, that is OP2 vector. So the position vector is OP2 vector with respect to origin, and will calculate as same way. Here origin coordinates are taken. I think these examples are sufficient to understand how to calculate the position vector with respect to an observer. In this way we can calculate the different position vectors with respect to different observers. Now we will see other type of vector, that is displacement vector, another very important vector in the physics. So it is defined as the final position vector minus initial position vector. That is nothing but displacement. Displacement means the shortest path between the initial and the final position. So in the vector form we can calculate the displacement vector as final position vector minus initial position vector. Now I am considering an example. Suppose there is an origin and this is the x, y and z axis. Origin as an observer. I am considering origin as an observer, and an object whose initial position I am considering with pi, that is x1, y1, z1 coordinate, and the final position I am considering here, that is x2, y2, z2. So if I want to calculate the displacement vector, so the displacement vector will be pi vector to pf vector, means the vector which is directed from pi to pf. This is the displacement vector. This is the displacement vector. I am considering here by r vector. So this is the displacement vector which is pointing from initial position. This is our initial position and this is the final position. So the displacement vector always points from initial to final. This you have to learn that. We are taking the displacement vector which is originating from the initial position and going towards final position. Okay, so I want to calculate this displacement vector, and with the help of the definition
displacement vector is final position vector. Means final position vector means this is our final position. So this OPF is our final position vector. And what is the initial position vector? Here you can write that this is our initial position vector, that is nothing but OPI cap, because observer is here. So observer is observing both the position. Object is shifting from initial position to final position. So I am considering the origin as an observer. So I am considering the position vector with respect to origin. Now I am calculating the displacement vector with the help of definition. Means displacement vector is final position vector, that is OPF vector minus OPI vector. So in this way we can calculate displacement vector. So displacement OPF vector, you can write OPF vector, that is nothing is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. I hope that you have understood it. x2 minus 0, y2 minus 0 and z2 minus 0 minus, okay, so I am writing here OPF vector, that is nothing but x2 minus 0 I cap, y2 minus 0 j cap plus z2 minus 0 k cap, and OPI vector x1 minus 0 I cap, y1 minus 0 j cap plus z1 minus 0 k cap. Now I want to calculate the displacement vector. So displacement vector will become x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Now I will subtract only I components, then jth part and then j part, sorry, k part. So I will write in this form. I will be common, I vector will be common, means the remaining will be x2 minus x1 plus y2 minus y1 j cap and plus z2 minus z1 k cap. In this way we can calculate the displacement vector. So this is our displacement vector. It's not a very big deal to calculate the displacement vector with the applying the definition. Simple. It's very easy. We have written the position vectors, mean final position vector and the initial position vectors, and with the help of the definition of the displacement vector, that is final position vector minus initial position vector, we have written this simple thing. So in this way you can calculate the displacement vector. Now I am taking some examples to clarify it. Now we will see this example number 1. There is a coordinate, that is 1, 2, 3, that is the initial coordinate of any object at t equals to 0. Now it is going towards B, which is a final coordinate, that is 2, 1, 4. So the displacement that we have to calculate, displacement vector. So the vector which is pointing from A to B, this is our displacement vector. So this is our displacement vector. And the displacement vector, that is nothing but final position vector minus initial position vector. So here you can write that OB vector minus OA vector. So OB vector you can write 2i cap plus j cap plus 4k cap minus OA vector, that is I cap plus 2j cap plus 3k cap. And after calculating 2i minus I, that is I, j minus 2j, that is minus j, 4k minus 3k, that is plus k. This is our displacement vector, that is I minus j plus k. And directly you can apply the formula. Directly we can say that final position minus initial position x coordinate,
into I cap plus final position minus initial position y cap और z final position minus z coordinate of initial position into k cap. So डायरेक्टली आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा. देखो फाइनल दैट इज 2 minus 1 2 minus 1 I cap plus 1 minus 2 into j cap plus 4 minus 3 k cap. सेम आंसर आएगा I cap minus j cap and plus k cap. Both answers are same. So either you can go in this way or in this way with the help of direct formula that we have introduced before this. So I would recommend that if you have understood the concept, go directly with the formula to reduce the time. Okay, so in this way you can calculate the displacement vector. Okay, so I hope that you have understood all the concept that we have covered in this class. Now we will cover some other concepts in the further classes. So for now, please go through it and read it carefully. If any doubts, share in the group. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you.